Khan from DGI as an assistant professor. The subjects which I am taking here is the taxation laws, and the topic which I am covering now is the residential status and the tax liability, or I can say the taxable income. Regarding this topic, in the previous class, what we have covered is the theoretical part, how to evaluate the residential status of an individual as well as other person, and the taxable income. This part has been already covered in the theoretical part, as well as I did some numerical part also. Now today again we will cover a numerical portion of the residential status and the taxable income. So one of the numerical which I am going to cover today is as follows. First of all, I will read the questions and try to explain you how to solve it. The questions. The question is, the following is the income of Shri Sudhir Kumar for the previous year 2005-6. This is the income. The detail which I am going to read is the taxable income, or the income of the Shri Sudhir Kumar regarding the previous year. The first income is profit from business in Iran received in India, rupees 5,000. This is the first detail of the income. Second is income from house property in Iran received in India, rupees 500. Third, income from house property in Pakistan deposited in a bank there, rupees 1,000. Fourth, profit of business established in Pakistan deposited in a bank there. This income is controlled in India. Out of rupees 20,000, a sum of rupees 10,000 is remitted in India. The amount is 20,000. Next, income from profession in India but received in England, rupees 2,000. Next, profits earned from business in Kanpur, rupees 6,000. Next, income from agriculture in England. It is all spent on the education of children in London, rupees 5,000. The last, past untaxed foreign income brought into India during the previous year, rupees 10,000. This is all detail about the income of Shri Sudhir Kumar regarding previous year. Now what we have to calculate? We have to calculate from the above particular, calculate the taxable income of Shri Sudhir Kumar for the previous year 2005-6. If his status is as a resident and ordinary resident, second, not ordinary resident, and the third is non-resident. In all three conditions, we have to calculate the taxable income of Shri Sudhir Kumar regarding previous year. So one by one, we will deal with the income, that whether it will be taxable or not in different status. So first is what? Profit from business in Iran received in India. Profit from business in Iran received in India. That means this income, that is rupees 5,000, this income is generated from a business which is established in Iran, but it is received, this income 5,000 received by Sudhir in India in previous year. So this income will be your Indian income. And as we all know that Indian income in all the three status will be taxable. Indian income in all the three status, that is resident and ordinary resident, not ordinary resident, and non-resident. I have written the short form of this. So Indian income in case of individual is taxable in all the three status. So this rupees 5,000 will be taxable in all the three residential status of the Sudhir Kumar. That is rupees 5,000 will be taxable. Fine. Next, point B. Income from house property in Iran received in India. Again, this income of rupees 500 which is being generated, which is being arise in Iran by the property, but it is being received in India. So as we all know that if income arise in foreign but if received in India, then that income will be known as Indian income.
So the rupees 500 again it will be an Indian income, and we all know that Indian income is taxable in all the three status. So it will be taxable in all the three status, whether it is a residential or ordinary resident or not ordinary resident or non-resident. So it will be taxable. Third, income from house property in Pakistan deposited in a bank there. Again, the third income is an income from property. Income from property which is being arises in Pakistan, that is a foreign country, and deposited there means it is being received there also. Means this income of rupees 1000 which is being generated or arises in Pakistan and received there. So this income of rupees 1000 is your foreign income. And regarding foreign income, it is taxable only in resident and not ordinary resident. And it is not taxable in not ordinary resident. Only there are two cases where it is taxable, and those two cases is regarding business and another is regarding profession. So this income from house property is neither a business nor a profession, so it will be not taxable here. And in not resident, it is not taxable. So 1000 will be taxable only in this case. Now fourth is profit of business established in Pakistan, deposited in a bank there. This business is controlled in India. Out of rupees 20,000, a sum of rupees 10,000 is remitted in India. Let me be very clear to all of you that if an income is remitted, so we don't have to bother about the remitted word. Means remitted अगर है तो उसको हमको ध्यान नहीं देना है. वो remitted हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, it doesn't matter. दो चीजें मैटर करती हैं किसी भी इनकम को इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम में क्लासिफाई करने के लिए. वो एक है एराइज और दूसरा है रिसीव्ड. अगर एराइज और रिसीव मत के लिए मतलब मैं इसको बहुत एक सिंपल उसमें आपको बता दूं. अगर आप इसके तीनों पॉइंट्स में जाएंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि एराइज और रिसीव्ड ये दो चीजों को आपको क्लियर रखना है. अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज इनकम के रिगार्डिंग इंडिया से टच कर रहा है तो वो इंडियन इनकम कहलाएगी. मींस अगर एराइज हो रही है इंडिया में, रिसीव हो रही फॉरेन में, तो भी इंडियन इनकम. रिसीव हो रही इंडिया में, एराइज हो रही है फॉरेन में, तब भी वो इंडियन इनकम कहलाएगी. ठीक है, तो ये जो इनकम है रेमिटेड वर्ड पे हमको ध्यान नहीं देना. रेमिटेड होती है मींस ट्रांसफर होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, डजंट मैटर. इस पे हमको ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ ध्यान देना है एराइज और रिसीव पे. तो अगर इस पॉइंट को हम क्लियर करें तो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान, डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, दिस बिजनेस इज कंट्रोल इन इंडिया. तो ये कह रहे हैं कि एक बिजनेस है जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिश है और वहां से एक प्रॉफिट एराइज हो रहा है और वहीं पे डिपॉजिट किया जा रहा है, वहीं पे डिपॉजिट किया जा रहा है. दैट मीन्स दिस इज ए फॉरेन इनकम. तो फॉरेन इनकम का आपने बताया था कि रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है. तो दिस 20,000 विल बी टैक्सेबल हियर. रिगार्डिंग नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में मैंने बताया था कि नहीं टैक्सेबल होती, लेकिन दो केसेस में टैक्सेबल होती है. एक, अगर कोई ऐसा प्रॉफिट जो किसी बिजनेस से राइज हुआ हो, ऐसा कोई प्रॉफिट जो कि फॉरेन इनकम है, वो प्रॉफिट जो फॉरेन इनकम है अगर, और वो किसी बिजनेस से राइज हुआ है और वो बिजनेस होली या पार्शियली इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो टैक्सेबल होगी. तो इसमें देखिए ये जो प्रॉफिट है जो कि पाकिस्तान में जो बिजनेस एस्टेब्लिश है वहां से राइज हो रहा है, लेकिन वो बिजनेस जो है इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे पार्शियली होगा चाहे होली होगा. दैट मीन्स ये जो फॉरेन इनकम है ये टैक्सेबल होगी. तो फॉरेन इनकम कितनी है 20,000, तो 20,000 पूरी टैक्सेबल होगी. रेमिटेड पे कंफ्यूज नहीं होना. रेमिटेड कितना भी हो, रेमिटेड कितना भी फिगर हो, कुछ भी हो, रेमिटेड से हमको कंफ्यूज होना ही नहीं. रेमिटेड में हमको ध्यान ही नहीं देना है. अगर हमने ध्यान दिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आउट ऑफ रुपीज 20,000 अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज रेमिटेड इन इंडिया. 10,000 रेमिटेड कंफ्यूज करने के लिए उससे हमको ध्यान ही नहीं देना है, हमें सिर्फ 20,000 पे फोकस करना है. नाउ यही फॉरेन इनकम नॉन रेसिडेंट के केस में नॉन टैक्सेबल होगी, तो उसको हम नहीं ऐड करेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड. एक प्रोफेशन है जो इंडिया में एस्टेब्लिश है, उससे इनकम जनरेट हुई और इंग्लैंड में रिसीव हुई. दैट मींस दिस इज योर इंडियन इनकम. तो इंडियन इनकम है कितना अमाउंट है 2,000. दिस विल बी टैक्सेबल इन ऑल द थ्री स्टेटस. फाइन. नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर. ये तो बहुत क्लियर है कि ये कानपुर में एस्टेब्लिश हुआ है बिजनेस, कानपुर से ही इसका प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो ये इंडियन इनकम है. तो ये इंडियन इनकम 6,000 विल बी टैक्सेबल इन ऑल द थ्री केसेस. ये तो आसान था. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड.
इट इज ऑल स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन लंडन। ये जो आखिरी का पार्ट है, स्पेंड ऑन एजुकेशन इन चिल्ड्रन इन लंडन, इट डजंट मैटर, इसको हमको ध्यान नहीं देना। हमको क्या करना है, इनकम टैक्सेबल है कि नहीं, ये हमको ख्याल, इसका हमको कैलकुलेशन करना है। ये कहाँ स्पेंड हो रही है, ये हमारे इसका पार्ट नहीं है। नाउ ये कह रहे हैं कि ये जो इनकम 5000 रुपीज है, ये एग्रीकल्चर से अराइज हो रही है, और ये एग्रीकल्चर कहाँ पे हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है। तो दैट मीन्स ये वहीं पे अराइज हो रही है, वहीं पे रिसीव हो रही है। रिसीव कहाँ पे हो रही है, इसका अगर इसका इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब जहां अराइज हो रहा है वहीं रिसीव भी हो रहा है। कि ये इनकम रुपीज 5000 कहाँ रिसीव हो रही है, इसका कोई इंडिकेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये जहां अराइज होगी वहीं पे रिसीव भी हो रही है। तो अराइज कहाँ से हो रही है, इंग्लैंड में, और रिसीव कहाँ हो रही है, इंग्लैंड में। दैट मीन दिस इज ए फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में नॉन टैक्सेबल है। हाँ, टैक्सेबल अगर है तो वो बिजनेस और प्रोफेशन के रिगार्डिंग दो केसेस हैं, वो ना तो ये इनकम बिजनेस की ना प्रोफेशन या एग्रीकल्चर से है, तो ये नॉन टैक्सेबल होगी। और नॉन रेसिडेंट में अगेन इट विल बी नॉन टैक्सेबल। ठीक है, फॉरेन इनकम तो नॉन रेसिडेंट में नॉन टैक्सेबल है, उसमें कोई क्लॉज ही नहीं है। नाउ लास्ट, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मैंने पहले प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि कोई भी प्रीवियस ईयर से पहले की कोई भी इनकम होगी वो हमारे इस कैलकुलेशन में नहीं आएगी, वो हमारे इस कैलकुलेशन में नहीं आएगी। तो ये जो लास्ट पॉइंट है कि अनटैक्स फॉरेन इनकम जो है इंडिया में ब्रॉड किया गया ₹10,000, इसको हम कहीं भी नहीं शो करेंगे, इट विल बी नॉट शोन इन दिस कैलकुलेशन। फाइन, इसके बाद हम इसको टोटल कर लेंगे, वी विल कम टू द टैक्सेबल इनकम। अगर सुधीर कुमार का रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का स्टेटस होता है पिछले साल प्रीवियस ईयर अगर है, तो उनकी पूरी टैक्सेबल इनकम होगी, दैट विल बी 39,500। If his status is not ordinary resident, then the total taxable income is 33,500. And if his status is non-resident, then taxable income is 13,500. उनको इसी पे सिर्फ टैक्स देना होगा। तो this is all about how to calculate the taxable income of an individual. Fine. तो अब ये हमारी बहुत सी जो इस पे 2-3 क्लासेस हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिया है, एंड आई होप दैट कि ये बहुत हद तक क्लियर है हमारा टैक्सेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत थॉरोली कर लेंगे, कर लिया है, आगे आप हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इसको इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड इनकम की जो है, जो मैं हमने पहले बताया था, इससे पहले बता चुका हूँ मैं। सैलरी है आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अदर इनकम है। तो इन 5 हेड्स में से हर एक हेड्स को हम लोग बहुत ही क्लोजली इसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे तो अब हमारे कोर्स में सैलरी सबसे पहले है, लेकिन मैं इसको बाद में शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं नेक्स्ट क्लास में जो है, जब भी नेक्स्ट क्लास हमारा होगा तो हम उसमें इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसको हम शुरुआत करेंगे टैक्सेशन लॉस में। थैंक यू।